So welcome to DAM History Optional. Today is the first day. Write the name DAM History Optional. And this year we will be starting primarily with world history. You already have the syllabus, you have the topics, and it is the first day today. And we have got the questions evaluated as well. But before we proceed, I would like to give you a brief about how to approach answer writing in history option. Do's and don'ts कहो, एक outline, primer, जो कुछ कहो, ready reckoner. तो पहली बात तो I would like you to understand that in history, answer writing is particularly different from other optionals. I am not saying difficult, I am saying different. And why is that? The reason being that in the class when we teach, in the books when you read, we want to understand the narrative. कि घटना क्या घटी थी, story कैसे evolve हुई. So the teaching and reading part, the understanding part is primarily at the level of narrativist understanding. But the answers do not want you to write the stories. So the first issue is narrativist versus perspectivist understanding. आप ये समझो अच्छे से कि आपकी पढ़ाई किताब में हो जहां भी हो, इट विल बी प्राइमरीली नरेटिविस्ट. आप हिस्ट्री डैम के लिए हो दोनों? ओके. आपके नाम क्या है? धनंजय, हर्ष. ओके, आई रिमेंबर योर आंसर. योर लेट लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखा हुआ है. हर्ष का मेरे पास कोई पॉइंट है नहीं अभी यहाँ पे. ठीक है, एनीवे. सो फर्स्ट थिंग इज दैट आंसर्स आर सपोज टू बी perspectivist and not narrativist. There are very few chances of UPSC asking you a question जहाँ पे वो आपको पूछेंगे क्रोनोलॉजी बताओ पूरी. नहीं पूछेंगे, आपको कहानी नहीं. You have to presume that the evaluator knows the story entirely और आप उसको बस रेफर कर रहे हो और आगे चल रहे हो. What is required actually is the perspective, is the argumentation. वहां से अब दूसरी बात आती है कि what is the argument. लोग कहते हैं कि हिस्ट्री इज फैक्चुअल फैक्चुअल फैक्चुअल. वो तो है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ना नई बात है. बट द पॉइंट इज आवर आंसर्स आर नॉट सपोज टू बी नेसेसरीली कंप्लीटली फैक्चुअल इन कंटेंट. आंसर्स आर सपोज टू बी आर्ग्यूमेंटेटिव. तो you do not have to recall lots of facts and neither do you have to mug up lots of facts when you write the answer. हमें लिखना है arguments, and arguments are to be front loaded and they are supposed to be supported with some evidence and the facts have evidentiary value. So second important point is you should understand the difference between argument versus facts. आर्ग्यूमेंट आपके एनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो आप क्वेश्चन देख के उसको डिकोड करके ऑन द स्पॉट क्रिएट करते हो और उनको हवाबाजी ना लगे इसलिए सपोर्ट करने के लिए व्हाट यू हैव इज फैक्ट्स. तो फैक्ट्स आर नॉट द प्राइमरी थिंग. फॉर एग्जांपल व्हेन आई से यू टू राइट मल्टीपल डायमेंशंस इन द आंसर, क्या मतलब होता है उसका? यू आर नॉट सपोज टू राइट 10 फैक्ट्स. अगर आप 10 फैक्ट्स लिखोगे एंड इफ ऑल द फैक्ट्स आर सब्सटेंशिएटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट, तो वेयर इज द डाइवर्सिटी इन द आंसर? ये तो एक ही पॉइंट आपने लिख दिया, 10 फैक्ट तो एक ही पॉइंट बात बता रहे हैं मुझे. तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एक्चुअली व्हेन आई सी द आंसर इज डाइवर्सिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर एवरी आर्ग्यूमेंट इफ यू हैव वन सपोर्टिंग फैक्ट, का काम हो गया. तो उतनी ही चीजें मिनिमल याद रखनी है, नॉट टू मेनी. हमको खुद को फैक्ट से ओवरबर्डन नहीं होना है, कोई नहीं कर सकता इतना याद. हमें सीखना क्या है, ये पूरे प्रोग्राम का पर्पज ये है कि व्हेन यू लुक एट अ क्वेश्चन, डू यू हैव दैट क्राफ्ट एंड आर्ट बोथ of creating argumentative structure. वो जिस दिन आसानी से हो जाएगा आपका काम हो जाएगा. फैक्ट्स भले हो सकता है सेम फैक्ट सेम आर्ग्यूमेंट के लिए आप फैक्ट ए यूज कर लो, मैं फैक्ट बी यूज कर लूँ, डजंट मैटर. बोथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर द सेम, दे विल गेट सेम पॉइंट्स. तो मुझे बढ़िया वाली फैक्ट याद है उससे कुछ नहीं होगा, इसलिए 10 किताबें पढ़ के मैं और 4 फैक्ट इकट्ठा कर रहे, नोट्स मेरे बढ़िया हो गए, कॉम्प्रिहेंसिव हो गए, इससे भी कुछ नहीं होगा. तो हमें फैक्ट कलेक्टर नहीं बनना है, हमें आर्ग्यूमेंट क्रिएटर बनना है. बी द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन. ठीक है, दैट इज माय सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. देयरफॉर डोंट वरी अबाउट फैक्ट्स, करेक्ट होने चाहिए. जैसे कि किसने लिखा था वो, शायद लोकेंद्र ने लिखा था, यू रोट अबाउट आइंस्टाइन. हाँ, तो फैक्चुअल एरर
भले ही गलती से हुई हो बट नहीं करनी है. And lots of you have written in today's question about printing press. Printing press was invented, although not invented, but it was it made it became rather a commercial enterprise at least 100 to 150 years before the beginning of scientific revolution. So printing press is not the inherent, वो तो हो चुका है, बन चुका है scientific revolution से पहले. तो again that was another factual thing. तो chronological sense should be very clear. हम वहाँ पे आएंगे. The third point I want to talk about is a very old thing that everyone always keeps questioning. सोचा एक बार शुरू में ही इसको हम खत्म कर ले for directive words. I hope after this there should not be any confusion about what is the meaning of any directive word. एकदम बेसिक चीज है, एकदम सिंपल है, एक बार सुन लो, उसको हम वहीं पे निपटा लेंगे. There is no point in making fetish out of it. ये directive words का मतलब ये होता है और बड़ा लंबा है ना, कोई जरूरत नहीं. There are only three types. Actually 2.5 types, मतलब three types. क्या है? On one hand you have simple like explain, you have justify, elucidate, illustrate. ये सारा एक ही है, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं है. ऑल ऑफ देम मीन द सेम थिंग. डायरेक्टिव वर्ड्स डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, हम जानते हैं. दे गिव अस द फ्लो हाउ टू स्ट्रक्चर द आंसर. बट देयर आर 20 डायरेक्टिव वर्ड्स, बट दैट डज नॉट मीन देयर 20 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. नहीं, दो तीन ही है. ये सबका मतलब एक ही है. दे आर इंटरचेंजेबल. इट विल नॉट हैव एन आयोटा ऑफ चेंज इन योर आंसर. On the other hand, what you have is examine, critically examine. You have, for example, analyze. Again, critically analyze. You may have to what extent. Also, do you agree? ये हो गए सारे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स. यहाँ पे यू कैन एक्सचेंज एनीथिंग फॉर एनीथिंग, डजंट मैटर, सब एक ही है अपने लिए. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. यहाँ पे यू हैव टू गो फुल ब्लोन एनालिटिकल. You have to discuss multiple dimensions from this side, from that side, from any which side you can, and then take some kind of perspective at the end. In the first block, what you have is you are not supposed to engage critically much into the statement. Don't go for any counter views or any as such. यहाँ पे सिंपल इतनी ही बात करनी है, जो दिया है उसका सच मानना है. Assume that hypothesis is axiomatic, it is correct, and you just explain, you just elaborate. यहाँ पे लिखा elaborate, वो भी एक है elaborate. बस विथ सम एग्जांपल्स यू elucidate करो, खत्म. कुछ है नहीं उसमें. दो कीवर्ड्स हैं जो दोनों के बीच में फंसते हैं. वहां पे यू हैव टू टेक अ कॉल ऑफ जजमेंट थोड़ा थोड़ा. एक है डिस्कस, एक है कमेंट. Here the balance may shift either towards elaborate side or critically analyze side depending on your sense of the statement. कोई दिक्कत नहीं. आप क्या कर सकते हो कि भाई 75-80% of the answer still remains elaborate and 20-25% can become critically analyzed. खत्म, कमेंट हो गई मेरी. और इफ यू फील लाइक यू कैन गो मोस्ट टू क्रिटिकल 50% एनालाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं. So this is, इसका बैलेंस कहाँ पे रखना है डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इसमें ज़्यादा सोचने की दिक्कत नहीं है. सो बाई एंड लार्ज देयर ओनली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डायरेक्टिव वर्ड्स, खत्म. तो आई होप कि ये इशू अभी को लिए दफन कर दे हम. ओवर नेक्स्ट 4 months हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सवाल देखना है. वहाँ पे ये बेसिक इशू बार बार ना आए. अगर आता है, यू मोस्ट वेलकम टू कम एंड डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है. बट आई एम टेलिंग यू दीज आर नॉट थिंग्स दैट शुड होल्ड यू बैक. ये छोटे छोटे हर्डल्स. देन इन क्वेश्चन आंसर राइटिंग, most important thing is understanding the exact demand of the question. How do you interpret it? And for that you have to have some understanding of the issue.
It requires some kind of basic awareness of the context that helps us interpret the question in a correct manner. Yes, it happened with you in this question. You connected the two things well. On one side you have scientific revolution, on the other side you have enlightenment, but the question was about the tools which were developed by scientific revolution and how they were utilized or enhanced by enlightenment. बट ये क्वेश्चन यूपीएससी पहले अलग फॉर्म में पूछ चुकी है कुछ सालों पहले. तो व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज टू लुक एट द पीवाईक्यूज अगेन एंड अगेन एंड अगेन. हम करेंगे, मतलब व्हाट आई विल डू थ्रू ऑल अवर डिस्कशन वीडियोज is to give you a brief perspective of the PYQs as well every single time, ताकि आपको गैमट ऑफ द क्वेश्चन समझ में आए. हो सकता है कि विल नॉट एबल टू कवर ऑल द थीम्स, वो तो अलग बात है, क्योंकि PYQs 25-30 साल के बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिपीटेशन भी है. आई विल आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर यू टू डू ऑल्सो, बट व्हेन यू डू सच काइंड ऑफ PYQ एनालिसिस ऑल द टाइम, इट हेल्प्स यू टू एक्सट्रैक्ट. अच्छा, आज सवाल यूपीएससी ने पूछा है क्योंकि इसका एग्जैक्ट उल्टा सवाल 10 साल पहले पूछा था. सो यू आर एबल टू गेट द, उसका हिंदी में कहते हैं नस पकड़ना, वो आसान हो जाता है. डिमांड ऑफ द इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स ऑन सच प्रायर नॉलेज, अदरवाइज यू कैनॉट डू इट ऑन द स्पॉट, इट बिकम्स डिफिकल्ट. दैट इज माई नेक्स्ट पॉइंट. नाउ आई वॉन्ट टू राइट कपल ऑफ मोर थिंग्स ओवर हियर. वो आपको पता हो. सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि व्हाट मेक्स द ऑप्शनल आंसर स्टैंड अपार्ट from the GS answer of history. Can anybody tell me? So you talk about two things, historiography and secondly the primary sources. They are two important. You are correct. So historiography is very important, and in this entire course or course cum test series, whatever you want to call it, that you don't worry about. I'll provide you ample historians, ample debates. Every question will come from some debatable context, so that your answers will be automatically hugely enriched. तो उसको आपकी दिक्कत नहीं आएगी. हो सकता है कि आपकी दिक्कत शुरू में आ जाए जब आपने क्वेश्चन देखा हो, बट व्हेन डिस्कशन इज ओवर दिक्कत दूर हो जाएगी. इवन टुडेज क्वेश्चन देयर इज अ डिबेट इन व्हाट, आपने नोटिस किसी ने नहीं लिखा, बिकॉज आई नो इट इज नॉट इन द बेसिक बुक्स दैट यू फॉलो. सो वैल्यू एडिशन, कंटेंट एनरिचमेंट के बारे में डरो ही मत. When we finish our entire world history at the end of the month, you will have enough views and viewpoints to add. Historiography is the first. Second thing is primary sources. Now, primary sources are very important for paper 1 than for paper 2. In modern India, we don't go for primary sources as such. कौन से न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था, हमें क्या करना है? So that is not our major interest, because the methodology of modern Indian history writing is beyond our scope. In case of world history also, we don't need primary resources much. We can cite sometimes some author, some quote, some book, etc., but it is not very important. What is important is thoda historiography and thoda quotes, that's all. Primary sources become extremely important for paper 1 than for paper 2. Historiography is good, important for both them, but primary sources are more for paper 1. ठीक है. Then you have to, जैसे आप maps बनाओ, even in world history you should be able to draw maps. कोई दिक्कत नहीं है. If you want to show decolonization, for example, if you want to show some war, some campaign, or some countries which underwent some kind of transformation, world map बनाओ तुरंत छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं. It will come very handy. Practice that. You can talk about, apart from world map, you can sometimes ऐसे होता है कि आपके पास facts ज़्यादा है, बट उन फैक्ट्स को आप आंसर के स्ट्रक्चर के फ्लो में इंसर्ट नहीं कर पा रहे हो. इट इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि आई नो फॉर बुद्ध क्वेश्चन ऑफ बुद्धिज्म, आई नो हिज इशू, द आर्गुमेंटेशन दैट आई एम इवॉल्विंग, बट आई वांट टू पुट 3-4 एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मैं आंसर में लिख नहीं पा रहा हूँ. मैं क्या करूँगा? दिखाना तो, शाइनिंग तो मारना है थोड़ा सा, तो मैं बगल में बक्सा बनाऊंगा. आई पुट दिस 3 फैक्ट्स विच आर रिलेवेंट टू द आंसर, कॉन्टेक्चुअल, बट दे डोंट कम इन माई फ्लो. कोई दिक्कत नहीं, कर दो. यू कैन राइट टू हिस्टोरियंस नेम, टू प्राइमरी सोर्सेस नेम, टू बुक्स नेम, कुछ भी कर लो. 2-4 उसके थ्योरी के नाम लिख दो, उसने लिख बताए हुए कुछ. So you can do all these things. There are these different tricks that will evolve as we go along. Then
sometimes you see what is the most important aspect in the history optional that is not very much necessarily present in GS is you have to bring out causality or causation. Now, causation of what kind? It may vary. Human have agency or not, or is it structural, materialist, idealist? It can be any kind of causation. All the debates come back to the same thing, causation debate. Was American Revolution mercantilist or mercantilist revolt, the capitalist revolt against mercantilism? Causation. अकबर बादशाह क्या कुछ कर सकता था? Causation, क्योंकि वो ह्यूमन एजेंसी है कि स्ट्रक्चरल फैक्टर उस जमाने का. Ultimately, you come back to causation. History optional में your understanding of chronology and causation should be impeccable. वहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. वो बेसिक चीज हो जाती है ऑप्शनल की. Causation and chronology. ठीक है. Now, one practical point, and that practical point is about how to create a structure of the answer. यहाँ पे I will not discuss those things कि भाई intro, body, conclusion, etc. वो तो ठीक है, वो तो given है. And I have seen almost all the answers except for 2 or 3 maybe, and I can understand कि you understand what is the structure of the answer. मुझे वो दिक्कत नहीं है. I have a practical query in my mind. When you sit in the exam hall and you have got 8 to 9 or 11 minutes to write the answer, वहाँ पे what is the cognitive process that undergoes in your mind? When I read the question, within first 30 seconds, 45 seconds, मेरे दिमाग में क्या प्रोसेसिंग होता है, वहां से स्ट्रक्चर बनेगा. There are 2 possible ways which I keep telling everybody all the time. एक ये है कि क्वेश्चन देखते ही अच्छा मुझे टॉपिक पता है, एक फैक्ट, दूसरी फैक्ट, तीसरी फैक्ट, चौथी फैक्ट, चलो उनको अरेंज करो, इंपॉर्टेंट फैक्ट को ऊपर लाओ, आंसर बन गया. So you remember, you try to recall some specific important data points that you can recall very easily, and you arrange them in some fashion, some logical way that becomes the structure of the answer. So you are going from data to the structure. It is the most natural. It happens with you and me all the time. क्वेश्चन देखते ही 20 मार्क सोचा, अच्छा 1 2 3 4 5, चलो अरेंज करो, आंसर लिखो. From data to structure. But there is other way possibility also, from structure to data. Look at the question. When you think of causation, analysis, interpretation, you do not talk of the data at all. Just for a moment, consider a blank चीज है. जैसे आज का सवाल ले लो, you have about the relationship between scientific revolution and enlightenment, right? If I ask a simple question, क्या connection है? Even if you don't know what scientific revolution is, even if you don't know what enlightenment is, you know the question is about what is the connection between A and B. These are black boxes for me. Can you create a structure out of black box? Because when you create a black box, you don't have data points. So I can say, so A developed certain things which helped in B. But A में ऐसी भी कुछ चीजें थी तो B में नहीं थी, और B में ऐसी कुछ चीज थी जो A से नहीं आई थी, और B was not dependent completely on A. B had innovated some of its own, or B had something else coming from elsewhere also. खत्म हो गए मेरे 4 arguments यहीं पे. Think of examples. In case of scientific revolution, enlightenment, it developed some tools which helped enlightenment. But not only scientific revolution, I have उसी समय political changes, economic changes, social changes, they also help enlightenment. Enlightenment is not dependent completely on scientific revolution. It also innovated certain things by its own which have not come from anywhere. हो गए मेरे 3 major structure of argument. खत्म. तो and then you think of specific, न्यूटन की बात करो, you think of Descartes, you can think of Locke, you can think of any damn thinker, it doesn't matter. In this answer you will understand the relatively less important are the facts. You can use Galileo, I can use Newton, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. You can use Rousseau, you will use Kant, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Examples है वो, Kant and Rousseau are examples, they are not the arguments. Argument तो आपके आंसर में रहेंगे. समझ रहे हैं मेरी बात? So one way is to go from data to structure, which is the most natural way for us because that is the way we were trained to think so far. But the other way is to go from structure to data. उस केस में क्या होता है? उस केस में फायदा ये होता है that your interpretation of question is always holistic. You don't miss the demand of the question. And then it may happen कि आपने 4 arguments on the spot generate कर लिए,
बट फॉर वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स यू डोंट हैव डेटा पॉइंट, ठीक है, मत लिखो या फिर लिखो विदाउट डेटा पॉइंट. My point is that in history option, when you start writing answer paper, one stream you will get 5 questions plus maybe 3 or 6, right? Either 8 और 11 सवाल आप लिखोगे वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन में, सेक्शन बी ऑफ पेपर 2. तो वो 8 और 11 सवाल जो होंगे उसमें से हो सकता है कि आधे सवाल यू राइट फ्रॉम डेटा टू स्ट्रक्चर एंड आधे फ्रॉम स्ट्रक्चर टू डेटा. ही होगा बिकॉज वी कैनॉट डिटरमाइन कि मैं इसी फॉर्मेट में सोचूंगा. इट डिपेंड ऑन टॉपिक, जानते कितने उसके बारे में आप. So you have to be flexible with both the formats, but assume that there are two formats of thinking, not only data to structure. How many of you come from the technical background, engineering, sciences, etc.? You would know you do for experimentation. आप कभी curve plot करते हो, you have data points, and then हमें बोलते curve fit करो, curve fitting. You write some equation, and then you go for अच्छा इसमें ना ये curve fit हो रहा है with some kind of minimal distortion. तो यहाँ पे इफ आई टेक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो मेरी ये सबसे कम है वैल्यू. अरे दिस इज द लीस्ट वैल्यू. सो आई हैव डेटा पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन आई फिट द कर्व. व्हाट आई कैन डू इज आई डिटरमाइन कि नहीं ये मेरा कर्व ये नहीं होगा. इंस्टेड ऑफ दैट दिस इज माई आर्ग्यूमेंटेशन. नाउ माई स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड. लेट मी थिंक इसके कोई नजदीक डेटा पॉइंट मिलता है क्या मुझे? अच्छा मिल गया, आई गॉट द एविडेंस एंड लाइकवाइज. समझ में आ रहा है? So you should do both the things, data to structure. It may sound a little theoretical right now, but as we go along over the next few weeks, you will come to know it is very easy. It is very easy. Okay? So you have next point was structure of the answer. Now I want to give you last more thing. Understand that you will ask me for model answer all the time, and I will provide you model answers. I will not provide you model answer. I will try to provide you model answers. The reason being, ये जो model answer concept इसको हम मानते ही नहीं है. It is humanities. One question may have multiple answers. They may have same essence, but they may have different structures, different approaches, and they are equally valid. They may get equally good numbers. If I give you one model answer, उसका मतलब ये होता है I am straight jacketing your thinking into one format. I am forcing you to think the way I think only all the time. जरूरी नहीं है कि हो सकता है आपकी सोच कुछ अलग हो, कुछ बेहतर हो. And it is not only about single answer, it is also about within the answer जो अलग अलग parts है, like introduction. Intro can be of multiple types. We'll discuss. आज हम इतना नहीं खोलेंगे सब कुछ. Over next few days you will see we'll discuss different types of intros. For a same question, I will discuss 3-4 intros today for the same question, but that is एक छोटी झलक होगी. वो हम आगे जाके देखेंगे कैसे अलग अलग इंट्रो फॉर द सेम क्वेश्चन बन सकते हैं. हमें बेसिक डैम का पर्पस ये है जिसको हम कहते थे दिमाग की खिड़कियां खोलना. द मोमेंट यू लुक एट द क्वेश्चन, मैं आपको मुझे 3 इंट्रो बताओ इसके अलग अलग. टेल मी 2 different conclusions. So you should be able to come up with such multiple intros and multiple conclusions. That is the good exercise. That will make your mind agile. That will help you generate lots of points. Even for the main body, तो बताइए. Even for the main body, we'll try to do. Sometimes, not always, but sometimes I'll give 2 or 3 structure for the same question. आज मैंने एक क्वेश्चन के लिए वैसे किया हुआ है. ठीक है. So with those points, my brief about answer writing is over. We'll go to the questions now. So the topic was enlightenment. Enlightenment is actually a very important topic. हर साल एक सवाल तो आता ही है. Not only that, understand one thing, in UPSC syllabus they have not specially mentioned intellectual history. In case of ancient, medieval, modern, they do not ask us thinkers. It is only and only in world history the thinkers are involved explicitly. Rousseau है, Kant है, Marx है, and some thinkers implicitly sometimes. So intellectual history is very important in world history, more than it is important in other parts of our syllabus. And enlightenment forms a core part of intellectual history. That is my first thing. And secondly, therefore, it becomes a little bit theoretical in approach. And theory समझना लिखना, it is little different than history. So ये topic
कईयों को थोड़ा सा मुश्किल जाता है, स्पेशली द पार्ट कांट एंड रूसो। अब सीधी बात है ना, इफ आई आस्क टू स्टडी रूसो विदाउट टेलिंग यू टू स्टडी द अदर टू थिंकर्स हु केम बिफोर हिम, लॉक एंड हॉब्स, आप तो मतलब बिना सर पैर के काम कर रहे हो, होगा ही नहीं। इफ आई आस्क टू स्टडी मार्क्स विदाउट टेलिंग हिम कि हु इज हेगल, बिना सैर पाव के आप काम कर रहे हो। इफ आई आस्क यू टू स्टडी कांट विदाउट टेलिंग यू द होल डिबेट ऑफ एम्पिरिसिज्म वर्सेस रैशनलिज्म दैट डेवलप्ड फॉर ओवर 2 centuries, बेकन ने क्या कहा, स्पेंसर ने क्या हुआ, सब चीजें, तो विल बी लाइक क्या बात, कांट है कौन, उसने इतना सिंपल डिफरेंस मैं भी लिखता, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये होता है बिकॉज थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए, वो सिलेबस में मेंशन एक्सप्लिसिटली नहीं है बट करना पड़ता है। नॉनदलेस लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट। आई हैव डिवाइडेड द क्वेश्चंस इनटू, यू विल हैव द हैंडआउट अपलोड हो जाएगा, different segments, not as per syllabus but as per my categorization. Some of the questions are on meaning, nature, ideas and causes, सब muddled है। One question was the Enlightenment represented alternative approaches to modernity, alternative habits of mind and heart, of conscience and sensibility। दिखने में बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं। In different parts of life उसमें क्या अलग था बताओ, compared to the previous era, basic ideas बताने। He, Voltaire, was living in the age of enlightenment. The age itself was not enlightened. ये क्वेश्चन कई लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। The question, the statement is of Immanuel Kant from his that famous pamphlet or essay, What is Enlightenment? उसमें आता है। When you read the statement, it looks as if he is talking about Voltaire. He is not. इस पूरे क्वेश्चन का आंसर you can write a very good answer without even referring to Voltaire. Voltaire is just example. आप कल उसके जगह किसी और को डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, मॉन्टेस्क्यू डाल दो, डिडेरॉ डाल दो, डेलेम्बर्ट डाल दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्वेश्चन इज देयर आर सम थिंकर्स हु आर वेरी प्रोग्रेस्ड बट द सोसाइटी, द स्ट्रक्चर्स, द इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एट दैट लेवल, बस इतना ही लिखना है। तो वॉल्टेयर इज जस्ट एन एग्जाम्पल हियर। एक्सप्लेन द मेजर आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो इन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। What was enlightened about the age of enlightenment? Again, what is the idea? बताओ। The two questions that came on direct connection between scientific revolution. One was the principles of enlightenment were in some ways a continuation of the discoveries and theories of scientific revolution. Critically examine. Critically examine. Today's question that we have is not even of that level. हम कर लेंगे वैसे थोड़ी देर में, but it is a simple question. The second question is enlightenment was not confined to scientific revolution alone, but humanism and ideas of progress too were its inseparable constituents. Examine तो not only this but also this and that. यही तो होगा एग्जामिनेशन क्रिटिकल आपका। तो बस सवाल ये पहले अगर पूछ लेते, बाद में पूछ लेते, आपका आंसर इसने खुद दिया हुआ है। You have to learn to use PYQs. Then two questions on enlightenment despotism, quite simple questions. The despotic rulers of Europe were influenced by the philosophy of enlightenment and began to follow a benevolent policy towards their subjects. Critically examine. So was it really benevolent? Were they really benevolent or not? Or what was their ulterior motive? And even if they did not have ulterior motive, were they effective? And even if they were effective, was it useful in the long term? Top down change काम नहीं करता. And a person from top would do the changes only insofar as it doesn't harm his own position. ये दोनों लिमिटेशन नॉर्मल चीज है यार। Enlightened despots were not necessarily politically liberal, so they may have reforms in economic, social, cultural, education, legal, everything, but not in politics. क्यों? Because they are despotic. They are rather using all the reforms in order to concentrate more power in their own hand. उनका अंतस्थ हेतु, ultimate motive कुछ और ही है। Legitimize and increase their power, both. They want to create new power bases by removing other people. So both legitimization and centralization, both. So they don't go for that, na? They don't do that. Take for example the abolition of serfdom. Initially they thought कि भाई I want to become absolute monarch. For that purpose I want to eradicate other power people, people with power who can oppose me in future. मुझे कौन oppose कर सकता है? Feudal lords. तो उनको जितना वीकन करूँ उतना मैं पावरफुल। बट हाउ डू आई वीकन feudal lords? तो उनके नीचे जो है उनका पावर बेस में हटा दूँ। आई विल गो फॉर सर्फडम एबोलिशन।
So it looks as if it is very progressive. It is very progressive, but it has also other motive कि भाई इनके पर काटूं मैं ताकि सत्ता मेरी बढ़े. So that is what centralization of power. ठीक है. So then we have Rousseau and Kant. I will not deal with them today क्योंकि we will have a question on them in our examination, in the month-end examination, either Rousseau or on Kant. तो आज तो मुझे बस पहला वाला पार्ट कवर करना था. So that is the point. Now come to the question at the hand. Very simple question, very direct question. Enlightenment extended the intellectual framework provided by the scientific revolution. Explain, not even critically analyze. Explain. यहाँ पे think of introductions. One intro could be, as Martin has written, a typical introduction. The question is about enlightenment. Talk about enlightenment. Enlightenment is an intellectual, cultural, intellectual, philosophical movement, etc. in 18th century aimed at using this and that. We have a very simple definition. Or even use can't. जो हम कुछ नहीं सूझे तो कांट बूझे. ठीक. तो कांट को लिखो कभी as Kant says it is man's, क्या है किताब, क्या डेफिनेशन है वो? From self-imposed immature tutelage. ठीक है. Coming of the age. ठीक है. You can start with that. It is called a stock introduction. Stock मतलब बने बनाए हैं, इस्तेमाल करो. प्री कास्ट कंक्रीट के टुकड़े जो होते हैं ना, जिससे जल्दी ब्रिज बनता है, ऐसे स्टॉक इंट्रोडक्शन से जल्दी लगाओ. बट यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शंस आर यूजफुल बट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट. दे विल नॉट इम्प्रेस द एग्जामिनर. दे विल नॉट. जैसे लोकेन ने किया है, लोकेन ने भी आई थिंक जेनरिक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, अमित ने भी लिखा हुआ है. देयर इज अ स्टूडेंट कॉल्ड मयांक. मयांक हैज डन गुड थिंग. आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सच काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन. कि whenever you have two things in questions, A and B, enlightenment is B, scientific revolution is A, or A and B, जैसे बोलना B and A. The question is neither about enlightenment nor about scientific revolution. It is about the correlation between the two. So generally हम कहते हैं कि क्वेश्चन देख के you identify the keyword. अब keyword क्या है? This is one keyword, this is another keyword. तो उस केस में इफ यू वांट टू, जो टिपिकल इंट्रोडक्शन होता है कि डिफाइन द कीवर्ड, खत्म. So many people have gone for it is enlightenment, define the enlightenment. So this is a typical way, but it is not necessarily a good way always. Because if you ask me personally, the keyword is neither enlightenment nor scientific revolution. It is the intellectual framework which is getting extended. These are the keywords for me personally. क्योंकि पूरा क्वेश्चन इज अबाउट दैट कोरिलेशन बिटवीन द टू. तो है कोरिलेशन कि नहीं है तो कितना है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये पूछा है. Although it is explained only, so we don't go into much critical analysis, but question is about the correlation between the two. So keyword जो आप, when you identify the keyword properly, even the intro would want to bring that out. Intro लिखते क्यों हो आप? The reason you write the introduction is to tell the examiner you have understood the essence of the question. ये आप जिस दिन बताओगे कि मैंने क्वेश्चन की नस पकड़ ली है, तो मैं खुश होता चेक करते करते, मतलब एग्जामिनर खुश हो जाता है. एंड इफ यू राइट ओनली द मीनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट और द साइंटिफिक रिवोल्यूशन, देन आपने नस नहीं पकड़ी है, आपने स्टॉक इंट्रो लिख के आगे चले गए हो. मे बी आपने आंसर फिर भी अच्छा लिखा हो, इन द मेन बॉडी द आंसर विल स्टिल बी गुड, आई एम नॉट डाउटिंग दैट, बट द इंट्रो डजंट इंडिकेट टुवर्ड्स दैट गुडनेस. इंट्रो तभी इंडिकेट करेगा जब उसमें आप ये कोरिलेशन की बात करोगे, उठाओगे मुद्दा, देन इट वुड बी अ गुड इंट्रो. It would be a very appropriate intro. समझ में आ रहा है सर? तो जैसे यहाँ पे we have got three intros. It was the scientific revolution of the 17th century that developed tools for analysis and new ways of thinking. Thereby it laid the intellectual foundation of the enlightenment. तो वहाँ ने इसी को elaborate कर दिया कि what is this framework? तो tools of analysis and new ways of thinking, and therefore it laid the foundation. तो हमने उसको थोड़ा खोल के बता दिया. It becomes introduction. Other could be scientific revolution created new ways of thinking about the natural world by challenging the traditional authorities. These principles were extended by the philosophers of enlightenment to the human world to create better society. तो आपने टूल बता दिए, उसका यूज बता दिया कि there was a specific tool for specific domain in earlier era,
Now the domain is enhanced, it is used everywhere. In the next era, khatam. Because it is 17th century and this is 18th century. यही तो बात है कि in the case of scientific revolution it is only about natural world. Now you go to human world. Simple. In both the cases you challenge the traditional authority, either church or anybody else. One of the major factors for introduction, one of the major factor. अब आप जाते हो थोड़ा सा critical angle. अब यहाँ पे आप खुद ही शुरू से ही बता रहे हो कि enlightenment definitely is influenced by scientific revolution, but not only by it. It is one of the many factors, although very important. So one of the major factors behind the rise of enlightenment was the scientific revolution, as it developed the fundamental principles of critical inquiry like rationalism and empiricism. ये बात तो सबने अच्छे से कही है, so I am not worried about this thing. This is almost all of you have talked about this in quite elaborate detail, and there is no error as such. So I am not bothered about explaining those things here. Employed by the philosophers of enlightenment for betterment of human world. So I hope in all these three intros हमने focus रखा है connection between the two के ऊपर, neither this or that. It is about the interlinkage. सवाल उसके बारे में है. And out of all the answers जो मैंने देखे सुबह से, I think only 2 or 3 of you have written that interlinkage in the introduction. Almost everybody else has focused on the definition of enlightenment, which is a good thing, but it's the starting. It is not where we want to. We have to reach to that level, next level. Is intro wala part clear? Let us move on. Main body. अब main body में you can have multiple structures, but before I go there, let me read out some common mistakes that some of you have done. जैसे लोकेन की हमने बात की, first is Einstein नहीं आना चाहिए, Newton आना चाहिए, but it was a unconscious error, तो ठीक है. And second is printing press by many people who are talking about the printing press उस समय कब की बन चुकी थी. Rather what we have at that time is reading revolution. You know that? आपने सुना है reading revolution के बारे में? What is that? Yes. So, but specifically about reading revolution, कि before the enlightenment era, लोग क्या पढ़ते थे? It was very few people who could read that. Literacy was very less. Gradually you have increased literacy, तो लोग ज़्यादा पढ़ने वाले बढ़े. So one is the number of people who can read has increased, but that is not all. Second part is the type of reading they do is also changed. For example, in the earlier era, they used to go for एक बाइबल है, एक कुरान है, या एक कोई भी किताब है, not only religious. Let us take any book XYZ. किताब मिलना आसान नहीं था. एक किताब को लेके आप पढ़ते थे सालों साल, बार 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 बार. इट इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग. जैसे कि आई यूज टू गो टू बाइबल स्टडी ग्रुप मेनी 10-12 साल पहले. तो हम ना उसमें एक चैप्टर है पैराबल्स नाम का. तो हम पैराबल्स लेके एक पैराबल पढ़ेंगे, ग्रुप में बैठेंगे, एंड उसका मतलब क्या हो सकता है 5 लाइन 10 लाइन का है स्टोरी, वो उसको 1-1 घंटा गुजारेंगे, डिस्कस करते. तो नेक्स्ट वीक विल गो अगेन नेक्स्ट पैराबल. तो मैं सोचा ऐसे किताब तो खत्म हो, जिंदगी खत्म हो जाएगी. लेकिन जिंदगी पॉइंट ये था कि दिस इज हाउ ओल्ड टाइम रीडिंग वाज, इंटेंसिव रीडिंग. रामायण को लेके जिंदगी भर पढ़े जा रहे. ऐसे उत्तर भारत में हर घर में कौन सी किताब होती है? तुलसी रामायण. सबकी याद भी होती है कई लोगों की पूरी की पूरी. रामचरितमानस है ना, आप पढ़ते. इट इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग. बट इन द एनलाइटनमेंट एरा यू हैव ट्रांजिशन टुवर्ड्स एक्सटेंसिव रीडिंग. इन एक्सटेंसिव रीडिंग हमें हर हफ्ते नई किताब चाहिए. नई किताब मार्केट में क्या आई है, एक बार पढ़ के दे दो आगे. तो लाइब्रेरी शुरू हो जाते हैं, नॉवेल्स, लॉट ऑफ प्रिंटिंग कल्चर कम. तो यू हैव दिस कलेक्टिवली इज इंक्रीज रीडरशिप ड्यू टू लिटरेसी एंड एक्सटेंसिव रीडिंग. इसलिए आपको पास चीप लिटरेचर आना बहुत शुरू हो जाता है. सो दैट इज द रीडिंग रिवोल्यूशन. दैट पार्ट डज हैपन ड्यूरिंग एनलाइटनमेंट, स्पेशली लेट एनलाइटनमेंट. बट प्रिंटिंग प्रेस इज ऑलरेडी देयर, तो वो गलती मत करना. ठीक है. समटाइम्स यू टेंड टू ऐड, जो आपको पता है ना आप डालने की कोशिश करते हो, जब नहीं करना चाहिए. जैसे कि आई डोंट रिमेंबर जिसने किया है कि द रिफ्ट बिटवीन एम्पेरिसिज्म एंड रैशनलिज्म दिखाने की कोशिश करिए 1-2 लाइन. ऑल्दो इट इज गुड, इट्स लाइक एडिटोरियल कमेंट, बट इट डजंट फिट इन द आंसर. उसकी जरूरत नहीं थी. What I found in many answers is people have focused on empiricism, rationalism. उसी के पूरे 2 पन्ने पूरे पन्ने लिख दिए.
These are very central points, I agree, but these are not the only points. उसके परे जाके सोचना चाहिए आपको. Only then your answer will stand apart from the other answers. Then a student called Sanket, he has given an example of Lisbon earthquake. It was a very good example. In 1755, we have earthquake in Lisbon. And then till that point of time, John Merriman talks about it in detail. Till that point of time, we have these debates कि भूचाल क्यों आता है, भगवान नाखुश है, पाप का घड़ा भर गया है. जैसे गांधी जी ने कहा था इन केस ऑफ बिहार का भूकंप में 1930s में कि अनटचेबिलिटी से सीन बढ़ गया तो भगवान ने भूचाल ले आया. Now this is completely irrational and unscientific explanation. In case of Lisbon earthquake, for the first time people started saying कि इसमें भगवान का क्या हाथ, it's a natural phenomenon. अगर ये पाप और पुण्य की बात होती तो इस भूचाल में इतने लोग मरे, इसमें अच्छे लोग क्रिश्चियंस भी थे, वो कैसे मर गए, और कई सारे जो पापी बच गए, ये क्या बात हुई. तो फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर नेचुरल फिनोमेनॉन यू हैव द आर्ग्यूमेंट्स विच आर कंप्लीटली साइंटिफिक एंड नॉट सुपर नेचुरल. तो ये बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल पब्लिक डिबेट, पब्लिक स्फीयर डिबेट होता है इन वेक ऑफ लिस्बन अर्थक्वेक. तो ये संकेत ने यूज किया था, इट वॉज अ वेरी गुड थिंग. देन you have Payal, who has used a typical structure but a very lucid structure. I found her answer to be very lucid with conceptual clarity. She has done a very straightforward job कि मैं पूछा है, I will divide into multi political, social, economic, cultural divide करूँगी. उसने अच्छा किया. Not other people, not I think एक और दो लोगों ने वो structure use किया. So that was a good thing. In enlightenment, if you want to show the application of rationality and empiricism, go to every domain one by one. दिखा दो. Anyway. And in case of Dhananjay, I said paragraphs should be small. You should understand the meaning of paragraph. What is a paragraph? Paragraph is one thought. One thought has maximum 2 or 3 lines, sentences, not more than that. Maximum 3 sentences, generally 2 sentences. Paragraph वहाँ पे खत्म होना चाहिए आपका. And therefore, when you ask me, मतलब लोग पूछते हैं कि सर bullet points में लिखने में फर्क नहीं पड़ता. As long as your one bullet point is as good as one paragraph, where you write 2 or 3 sentences and finish your thought, move to next paragraph, एक ही बात है, कोई फर्क ही नहीं है. Answer has to be analytical. Bullet point or not doesn't make any difference. Generally, in optional, people don't prefer bullet points. It is okay, but paragraph should be smaller. Yes, that is yes. One point, one argument, one paragraph, move on. So let us come to the structures of the body now. I have given you 2 structures over here. First structure is a very simple structure because your question has 2 parts, scientific revolution and the enlightenment part. तो हमने पहले आप बता दिया, तो मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है, बट सिंपल पॉइंट है कि व्हाट आर दीज इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स व्हिच वर इवॉल्व्ड इन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. क्या थी चीज, यू कैन गिव एनी एग्जांपल. बट इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क में इंटेलेक्चुअल, अच्छा 2 बार हो गया. एनीवे, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, सेक्युलराइजेशन, नेचुरल लॉज, मटेरियलिज्म, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ऑल दीज थिंग्स हैड देयर सीड्स समवेयर इन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. या फिर उसके पहले भी कुछ थे. इन केस ऑफ ह्यूमनिज्म इट गोज बैक टू रेनेसां एरा, अलग बात है, बट यू हैव दिस थिंग्स अपीयरिंग इन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. अब इन चीजों को आपको अप्लाई करना है इन केस ऑफ एनलाइटनमेंट. So you can bring many examples in case of enlightenment. You can bring political, administrative, economic, religious, social, and just take any. These are just random examples. You can example show कि कौन सा कैसे apply हो रहा है. In case of, for example, separation of power, it is rationalism, rational power distribution. You want to go for all men are created equal, humanism, right? So you can bring such things. You can call deism, it is scientific religion. I hope you know all the basics here. Okay. So simple answer would have 2 headings. The first heading is scientific revolutions, intellectual framework, and explain in 3-4 lines the principles evaluate with some or 1 or 2 examples. That's all. And then for the 2/3 of the answer, you focus on these examples one by one and how they indicate the application of the scientific revolution principles. Yes. That is my second structure. So I am giving you multiple possible structures to the answer. You are correct. You are correct. So this is one very simple structure in which you don't have to connect. If you can connect, it is much better. But it is little difficult for everybody to do. तो अगर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है तो ये स्ट्रक्चर है. But if you want to go to that next level, then you have second structure over here. It is more analytical and as per what you are saying. So मैंने इसको थोड़ा elaborate ज़्यादा किया ताकि समझ में थोड़ा आसान हो जाए.
यहाँ पे what we have taken every principle and उसका example from enlightenment and scientific revolution and connect them with examples. It is little difficult to do, but it is doable. It is not that impossible. For example, emphasis on reason and observation. You can talk of Bacon and Descartes, and then you talk of Voltaire and Montesquieu कि भाई उन्होंने किया यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे कर दिया. Simple. You can go for knowledge का secularization. The progress in science removed the veil of mystery from the nature. And क्योंकि अब there are no supernatural explanations in science, then why to go for such explanations in human life, in politics? Like divine right क्यों होना चाहिए? What is divine right? नहीं होना चाहिए. So no supernatural entity. We have many things like Copernicus, Galileo, Kepler sought to explain the heavens not in terms of God but in terms of mechanics. कैसे आसमान के तारे चल रहे हैं. Similarly, Voltaire advocated freedom of speech and critique of religious dogma. हमें criticize करना, क्योंकि all these explanations are reducing the domain of religion one by one from human life. It's a gradual secularization. लेकिन basic terms पता है. I am presuming all these things. आप सब फाउंडेशन कोर्स करके या पढ़ के आए हो, ठीक है. Natural laws. If the things are mechanistic, they work as per some law and not as per whims of God. मतलब that law can be mathematicized, that law can be discovered and then utilized for betterment. If it can be done for nature, law of gravity हमेशा रहेगा, so why not in society? Spirit of laws, economic laws, iron law of wages, law of free trade. ये तो कानून तो law ये शब्द क्यों आता है in humanities? It is because there is a belief that these are also sciences. So now the scientific tools are applied to human society, and there is an attempt to discover the laws which are more rational and better for progress of humanity. You can give examples. Then you can go for cultural shift away from spiritual interest towards worldly interest. So you have materialism as a focus, leading to discoveries and they leading to betterment of human life. So you have many examples. Enlightenment led to new forms of government, democracy and republics, new economic system like free trade and capitalism, new ways of education like in case of email. So you have in every sphere of life new models coming up to rationalize and better your life. And then you have next important point that almost nobody has written in the answer is the attempt of both of them, scientific revolution and enlightenment, to make the people aware of the knowledge. Dissemination of knowledge. दोनों में ये है. They formed associations, societies, wrote books and pamphlets and journals, gave speeches, published everything. So print culture is at the height. दोनों में knowledge का democratization चाहे. The best example in case of enlightenment is the most important daring project, that is encyclopedia. The very concept of encyclopedia कि all knowledge in the world can be rationalized, put together, quantified and disseminated, and it can be made utility based. और that itself is a very daring concept. और करके दिखाया, कभी नहीं पहले हुआ था. So that anyway, you have multiple examples. The question is then how to conclude. यहाँ पे भी you have multiple ways of conclusion. Thus it was the gradual shift from Renaissance to scientific revolution to enlightenment that helped in the emergence of the modern world. अब हिस्ट्री में एक और आपको नुस्खा बता देता हूँ. इफ यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट इंट्रो में क्या लिखूँ और लिख दिया तो क्या बचा फॉर कंक्लूजन. ये टिपिकल प्रॉब्लम होता है. समटाइम्स यू फील कि इंट्रो लाइन कुड हैव बीन कंक्लूजन इटसेल्फ. अब यहाँ पे क्या लिखो, तो हिस्ट्री में बड़ा आसान तरीका है, बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज. इट्स अ टिपिकल फॉर्मूला. इंट्रोडक्शन इज बैकवर्ड लिंकेज, पहले क्या था वहां से यहाँ तक पहुंचे हो. कंक्लूजन बिकम्स फॉरवर्ड लिंकेज, यहाँ से आगे क्या होने वाला है. तो एनलाइटनमेंट बिकम्स द प्रोजेनिटर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. तो कनेक्ट इट विथ मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्निटी का इमर्जेंस, आपका काम हो जाएगा. ठीक है. Forward linkage. Thus, in the transition from medieval dark age to the modern era, the role of scientific revolution and enlightenment was extremely significant. ठीक है, एकदम generic, plain, एकदम plain, कोई दिक्कत नहीं है. But third one, however, apart from scientific revolution, enlightenment was also influenced by political and economic changes like the rise of bourgeois interested in individual liberty and free trade. यहाँ पे you have gone थोड़ा सा critical. इतना liberty आप ले सकते if you want to show some analysis. In case of explain type question or comment or discuss. If it is critical analysis तो इससे काम नहीं चलेगा, you have to go much deeper. Is it clear? मुश्किल है कुछ, लेकिन थोड़ा सा I still need to give you some idea, क्योंकि ये आंसर ना इतना मजा नहीं आया. I'll be very honest.
There are a couple of more interesting points about it. If you read अपने मेरीमन चाचा, John Merriman, जो which is read in universities a lot and not in UPSC segment, I don't know why, but he has divided enlightenment in three parts. We know that early, high, and late. So you go for early, high, and late enlightenment. Now, what is early enlightenment? It is here you see the distinct and direct impact of scientific revolution. खास करके Locke belongs to this era. Many people, there are actually four major thinkers. एक आपका है बेकन, फ्रांसिस बेकन, then you have Locke. और कौन है बताइए चार लोग में से? Anybody? Descartes was before that, before Locke. You have no. Hobbes also come before Locke. Buffon. And then you have finally Spinoza. These four thinkers are at the cusp. They are at the end of scientific revolution and the beginning of enlightenment. They are the interlinkages. For example, Bacon is the one who makes the empiricism very fundamental. And that idea is then applied by Buffon to natural world, to study zoology and botany and everything. So वो empirical thought को पूरे natural world को apply कर रहा है, extension of that. Locke takes it much further, rationality को आगे ले जाता है और वो क्या करता है, natural rights की बात करता है. So he is also applying the tools of scientific revolution to socio-political world. In case of Spinoza, he brings pantheism. So he starts questioning the basis of ethics. Religion होने चाहिए क्या, नहीं होने चाहिए. किताबें बड़ी famous, ethics नाम की किताब लिखी है उसने. So Spinoza applies these methods to religion for the first time and comes up with pantheism. So in case of Locke, to socio-political domain; in case of Buffon, to entire natural world; in case of Spinoza, to religious domain. The tools developed by these people already are being applied to these things in the early era. Late 17th, early 18th century. These all thinkers are before Montesquieu, Rousseau and Voltaire. उनके पहले वाली generation है, एक या डेढ़ generation पहले. And they show the clear linkage. So there could be another way of structuring the answer which focuses on the thoughts of these four people. In the first part we discuss the two entities, enlightenment and scientific revolution, and then in the second we focus on ये चार लोगों का पूरा focus करो, बताओ कि इन लोगों ने कैसे जोड़ा दोनों को. It could be possible. It is another structure. What is high enlightenment? It is the peak. अब आपके Voltaire and Montesquieu are the two major thinkers from 1720s to 1780s. Exact year तो ठीक है, Spirit of Law जब लिखा गया 1728 में, तो 1780s में जब आपका I think Voltaire या Montesquieu में से कोई मर गया. One of them died at that. तो ये 60-65 years के बीच वाला gap है. It is called high enlightenment, greatest of thoughts. And that enlightenment used to be the focus of earlier historians. Now it is no more important. अब सारा focus जो है वो आता है यहाँ पे. Latest historians in last 20-30 years focus on late enlightenment much more. यहाँ पे कौन thinkers है? Kant, very important one. He is the one who connects rationality and empiricism with noumena, phenomena and all those things. A priori synthetic and all those. But anyway, apart from Kant, we have Rousseau. Rousseau bringing emotions into picture, who challenges. उससे पहले था, yes, but वो पॉपुलर बाद में होता है, रोमांटिक एरा शुरू जब होता है तो, especially during the French Revolution भी. तो yes, so he becomes popular and influential after 1780s. So Rousseau का importance था. But similarly, you have another example of Adam Smith. He wrote Free Trade वाली किताब, The Wealth of the Nations. It was published in 1776, the same year in which Gibbons published the Decline and Fall of Roman Empire, the first volume, 1776. That year is very important. थोड़ा मैं डाइवर्जन ले लूँ 2 मिनट के लिए. ये साल में 4 important चीजें घटी है. You have Free Trade Manifesto kind of thing written by Adam Smith. It changed the entire orientation away from mercantilism to laissez-faire. The second thing I said is Edward Gibbons ने लिखा हुआ The Decline and Fall of Roman Empire. It attacked Christianity like anything. Medieval का emergence is connected now with the emergence of church.
एंड एंड ऑफ मेडिवलिज्म इज एंड ऑफ चर्च का डोमिनेशन। वो पूरा उसने जोड़ दिया दोनों साथ में, एडवर्ड गिबन्स ने। इतना अच्छा रोमन एम्पायर था, फल फूल रहा था, इतने पावरफुल थे, कला संस्कृति इतनी आगे चली गई थी, व्हाई डिक्लाइन? बिकॉज वी बिकेम क्रिश्चियंस, द डार्क एजेस। दैट इज हिज आर्गुमेंट, one of the arguments, not the main, one of the arguments. Even 1776 is also important because in that year, American Declaration, which also is the first indication of Enlightenment thought. And it is also important for one more thing. In that year, James Watt came with steam engine. It started Industrial Revolution का major factor. So Industrial Revolution, capitalism, Enlightenment, on all, सबके लिए 1776 is a very pivotal year. But anyway, come to late Enlightenment. So you have these 3-4 thinkers becoming important, Adam Smith becoming important in late Enlightenment, Kant becoming important in late Enlightenment, Rousseau becoming important in late Enlightenment. Apart from these 3 thinkers, एक दो और चीजें हैं. Especially you have this enlightened despotism, जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं, पूछा है वो कब होता है? 70s, 80s, 90s में तो होता है. It is this era, and when that fails, there comes revolution. And then there is one more thing. There is Grub Street literature, जो आप बोल रहे थे. With printing revolution, now you have the low life authors who come to Paris or Paris in hordes and want to publish. They don't get anything because they want to become next Voltaire and Montesquieu. They can't. इतना ना पढ़ने वाले, ना छापने वाले, ना परवड़ता है आपको. And they want to live in the costly city. कैसे भाड़ा निकालेंगे? How will they pay the rent? So they start publishing random, जहाँ popular literature लिखेंगे. So that kind of popular literature जो कि येलो जर्नलिज्म है, लाइबेलियस है, कि राजा के रानी के लफड़ों के बारे में बताएंगे आपको, या फिर वर्साय के पैलेस में जो वहाँ पे करप्शन है उसकी बात, सीक्रेट अफेयर्स ऑफ द क्वींस, ये सब चीजें वहाँ पे. तो यू अल्टीमेट एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट लिटरेचर बिकॉज जनता वो पढ़ती है. जनता रूसो नहीं पढ़ती, जनता मॉन्टेस्क्यू नहीं, वो तो एलीट पढ़ते हैं इन सलून्स एंड कॉफी शॉप्स. जनता क्या पढ़ती है? स्कैंडलस लिटरेचर, येलो जर्नलिज्म, टैबलोइड जर्नलिज्म, उसको कहा गया है ग्रब स्ट्रीट लिटरेचर. एंड दैट जर्नलिज्म एक्चुअली गोज फॉर, as again Merriman calls it, desacralization of monarchy. So impact of Enlightenment thought on the people is not of Montesquieu and Voltaire directly necessarily. वो तो एक हाई लेवल पे है, पेडेस्टल पे बैठे हुए लोग, बड़े बड़े बादशाह है वो. नीचे क्या है जनता के मन में? एंड जनता इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज दैट जनता विच गोज फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट इज दैट जनता विच अटैक्स बास्टिल. तो वो है ग्रब स्ट्रीट लिटरेचर. That becomes important phenomenon in late Enlightenment. So on the early era, the main issue is its connection with scientific revolution. In the late era, the main issue is how the ideas percolate to the common people. वही वाला यूपीएससी ने ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया, ये आज तक नहीं पूछा है. तो we should be ready for that also in future. So it is outside the scope of this question, but I thought कि आपको एक बार ये आइडिया बता दूं, simple. Now coming to this continuity or not between the scientific revolution and enlightenment, it is very simple. You have a debate between the 2 important historians. One is Peter Gay and other is, नाम भूल जाता हूं मैं, Margaret Jacob. You have Peter Gay. He is a very famous historian of enlightenment. उसने जो 2 वॉल्यूम्स लिखे हैं, extremely popular है in academia, Peter Gay के enlightenment वॉल्यूम्स. He is a propounder of continuity thesis. He says, जो सवाल ने भी पूछा है, the question presumes the point of view of Peter Gay only, that enlightenment is nothing but extension of the framework created by scientific revolution to different areas. But we have, on the other hand, Margaret Jacob. She is also an important historian. She is the propounder of discontinuity thesis. वो कहती है नहीं. So if at all a question is critically analyzed, then only you have to go into this debate. इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, बट अगर क्रिटिकली पूछे, एग्जामिन पूछे, तो आपको डिबेट खोलना पड़ेगा. वो डिबेट क्या है? व्हाट इज कंटिन्यूटी? वी हैव ऑलरेडी सीन जस्ट नाउ. व्हाट इज डिसकंटिन्यूटी? शी सेज दैट 3-4 चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक एट सब्जेक्ट मैटर.
the subject matter of enlightenment is much wider than that of scientific revolution. Kaise? In the earlier era, it is only natural world, astronomical bodies, or something physical outside. But अब आप पॉलिटी, सोसाइटी, लॉ, एजुकेशन, इकोनॉमी, रिलीजन सबको अप्लाई करे जा रहे हो. सो फर्स्टली दैट डोमेन हैज एक्सपांडेड, जिसके लिए कोई प्रेसिडेंस नहीं था पहले, इन्होंने किया. द सेकंड थिंग इज दैट द methods that are used by the enlightenment philosophers are not necessarily only restricted to those which are developed by the framework of earlier revolution, scientific revolution. कैसे? Think of Rousseau's state of nature, Rousseau's social contract. क्या proof है इसका? Is it rational? Completely no. Is it based on some empirical evidence? No. तो कहाँ से आया ये? Is it based on any scientific revolution का principle? नहीं है. It is his मन की बात. So point ये है कि lots of things that happened in enlightenment did not necessarily use the methods of inquiry developed by scientific revolution. ये समझो. कुछ मेजरली है, कुछ कुछ नहीं. हाँ बिल्कुल, you can do that. Right. The third thing is about the role of religion. When I use the point secularization, there I was again following Peter Gay when he says that scientific revolution unveiled the veil of mystery from natural phenomenon, जैसे कि लिस्बन का अर्थक्वेक हो. तो कई सारे नेचुरल चीजों यू नॉट नीड गॉड एनी मोर टू एक्सप्लेन और रैशनलाइज. मतलब रिलीजन का रोल कम हो गया. रिलीजन बिकेम लेस इंपॉर्टेंट थिंग. देयर वाज डिमिस्टिफिकेशन. Therefore, if you go to next era, in the era of enlightenment, again you will see religion is now going on back foot in every domain of life, not only physics. In polity also, society also, culture also, everywhere it is going on back foot. So enlightenment philosophers are not primarily religious oriented. वो deism लेके आते हैं, which is scientific revolution, scientific religion, जिसमें भगवान को ना ट्रांसेंड, वो ट्रांसेंडेंटल है बट इमेनेंट नहीं है, कुछ करता नहीं. इट इज नॉन इंटरवेनिंग गॉड. तो कानून तो नेचर का ही चलता रहेगा. इट्स लाइक जैनिज्म ओनली इन अ वे. बट द पॉइंट इज व्हाट जेकब सेज, शी सेज नहीं, ये आपकी बात ठीक नहीं है. लॉट्स ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स वेर नॉट radical. Lots of them were actually, she goes on both the sides. Sometimes she says there are some thinkers which are very radical. On the other end of spectrum, there are many people who are very conservative also. भगवान को भी मानते हैं, चर्च को मानते हैं. They want reform in other domains but not in religion. So there is a religious enlightenment also, which is going only for reform and not radical change. तो इतना जरूरी नहीं है कि भाई इन्होंने हमला किया तो आप हमले को आगे ले जा रहे हो. Not all thinkers are that way. तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं. She also says कि enlightenment is more sometimes conservative, sometimes it is much sharper break from the tradition on both the sides. So these are the major three reasons. हमारे लिए काफी है इतने reasons. If they ask you कि भाई was it a continuation, so majorly yes, but we have the counterpoints also. लॉक शुरू में या बाद में बोल रहे? यस यस. देखो, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. आफ्टर एनलाइटनमेंट what you have is French Revolution, and what comes at the other end of French Revolution is altogether different world. The questions which were pondered over by thinkers of enlightenment were largely unrequired. They were completely out of place. The era was gone. So कई सारे thinkers of enlightenment become irrelevant in the post French Revolution era. कई सारे, because the social structure had changed, revolution had happened, industrial revolution was undergoing, new classes were emerging, सवाल ही बदल गए पूरे. So we cannot therefore apply the pre-FR people thinking to directly post-FR thinking. This is something we should keep in mind. कि political atmosphere completely changed, altered. And so that was it about this question and its peripheral things and also historiography. ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो.
वरना I will briefly go to the next question. It was a very simple question. The only way to dispel the error is by eliminating it with light of reason. Simple. It's quotation by Voltaire, but you do not need to know Voltaire. उसको बिना जाने बिना समझे आप पूरा आंसर लिख सकते हो. Question is not about Voltaire at all. It's about use of reason in different domains of life. So again, we have different introductions. A typical stock introduction, Kant की बात करो. So Kant in his What is Enlightenment essay encouraged the use of reason to liberate oneself from a self-imposed immaturity, and then you start with the answer. Reason की बात सवाल में पूछी हुई है. You can have Enlightenment thinkers. How many of you submitted this answer, by the way? I could see only 2 or 3 people. Of all these many people, only 2-3 लोगों ने आंसर सबमिट किया सेकंड वाला. Although we had given a commitment that we'll evaluate the first answer only. If you submit second, वो भी चेक करके दे देंगे. I think I had written in the group also. कोशिश करो दोनों लिखो. पहला तो पक्का लिखो, दूसरा कोशिश करो लिखने की. ठीक है. Enlightenment thinkers advocated reason as the primary tool for understanding society, question beliefs, and improve the world. Very simple. Again, there is nothing. Reason की बात करने कहाँ apply होता है. Enlightenment was a philosophical movement that emerged in 18th century Europe. It believed that human could use reason to identify the errors in thinking. Again, उसको आप elaborate करोगे. Identify the errors, challenge the superstition, ignorant beliefs, and correctly understand the world. Ultimately, the idea of progress and perfectibility of human. So ठीक है, but idea of progress is the primary thing. And then you given the main body, you go for various examples. I have given only 4 or 5 examples because question is 10 marker. ज़्यादा समय है नहीं. ज़्यादा स्पेस भी नहीं है. You will get only 2 lines, 3 lines of 3-4 examples. उसमें आपकी जगह खत्म हो जाएगी. तो इसलिए इंट्रोडक्शन भी यहाँ के बहुत छोटे हैं, 1 liner इंट्रोडक्शन से, because it's 10 marker. Then you can give political example, Locke or Montesquieu, social sphere, you can go to Voltaire, social reform, you can go to Condorcet or anybody. You can education, you can talk of somebody else, Emile Bolo, even you can talk of encyclopedia. Examples don't matter. Take from different spheres of life. कैसे exam का use किया गया, dispel the myth or error or darkness. यहाँ पे there is no much scope for argumentation. Although I still थोड़ी खुजली होती है argument करने की, करना चाहता हूँ, कहाँ करूँ? In conclusion. So what I will do here, I have 2 different conclusions which will bring out the argumentative side. And what is that? However, the application of reason was not universally accepted. So enlightenment को आप universally, uniformly, monolithically कहोगे कि reason तो नहीं है. There are voices within enlightenment who oppose excessive rationality. For example, some people are romantic who become important much later. शुरुआत तो वहीं से होती है, उसके स्टमक से, पेट से. You have people who are conservative, some who are reformist only. So radical reason तो हमेशा नहीं है और reason भी कई जगह नहीं है. So we should not excessively focus on only rationalism all the time. बाकी लोग भी थे उस जमाने में, उनको दरकिनार ना करिए. Yes, secondly, what I can say, while reason played a crucial role in dispelling error, क्या मतलब, is it a good thing? In the long term, it became the worst thing ever. Enlightenment, rationality, fundamentalism led to all the problems of the totalitarian state, Nazism and everything in 20th century. कहाँ से आते हैं? It's from the basic rationalism that emerged in Enlightenment. So all the post-Enlightenment thinker, post-Kantian thinker, post-modern thinker जो मानते हैं कि हिटलर बुरा है और उसका रूट ढूंढते हिटलर आया कहाँ से, they go back to Enlightenment. So attack on Kant becomes very important to attack Hitler. Although we don't agree, historians don't agree with it, but sociologists, etc., उनका philosophers, postmodern thinker, उनका पूरा खाद यही है. To attack the irrationalities and excessive state power of 20th century, you have to go back to the origin, जहाँ से सारा शुरू होता है. ये सारा शुरू होता है Enlightenment. तो रीजन को आप बोल रहे हो डिस्पेलिंग एरर, भाई उसने क्या उसके ह्यूमन लाइफ ही डिस्पेल कर दी एक पॉइंट पे आने के बाद. In 20th century, excessive use of rationality. So you have, it could also be manipulated. The rise of totalitarian regimes in 20th century, such as Nazism and Stalinism, demonstrated how Enlightenment rationality was subverted to propagate dangerous ideologies and perpetuate errors on a massive scale. So यहाँ पे, if at all you want to go into थोड़ा सा टेढ़ा, you can give these arguments. In conclusion, बस एक लाइन में, not more than that. But even if you don't do these things, it is completely fine. Simple is introduce Enlightenment, use of reason, give 5 examples, and say it was one of the great achievements opening modern era. Full stop. जो कि most probably करेंगे एग्जाम में.
उतना ही समय मिलेगा हमें सोचने का। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू प्री कंसीव्ड थॉट्स, जो आप यहाँ पे लेके चलो, इस्तेमाल कर लो यहाँ वहाँ। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेरी, समझ में आया?